Okay, so welcome everyone. So we are done with the paper one, and today we are talking about the second paper, that is instructional design. There are two questions over there, and I'm straight away jumping into the question here. The first question asks us to describe what is ADDIE and ARCS models, and it also asks us to state the similarities and differences between the two models, and also the applicability or the usage of this model. Okay, so let's begin. We'll talk about ADDIE model. So any idea what ADDIE model is? Have you heard of this before? Have you ever tried it before? Or probably we might have been using it but really don't know that is model ko ye naam bhi hai, something like that. So yeah, your inputs please. I have heard it, but I don't remember right now what it is. But yeah, definitely Okay. I have heard it, and if you will discuss it, then I can recall it. No, I Sure, think it's sure. a planned way of how to make or conduct sessions. Bilkul, absolutely. Point by point, right from the objective to how are you going to do the things, how are you going to plan, and Absolutely. end result क्या होगा, feedback क्या होगा. Great. Great. इसको Great. A, Thank you, B, Jigar. D, I, E करके. बिल्कुल बिल्कुल सही है. Welcome. So if you have pen and paper handy, you can start noting down and describe it in your own words. So ADDIE model is basically a systematic instruction design framework, and it is used to guide the development of effective training and educational programs. Okay, and ADDIE stands for analysis, number one, design, development, implementation, and evaluation. तो ये ADDIE. तो इसका ओवरव्यू लेते हैं और समझते हैं एक एक स्टेज पे क्या होता है. सो विद एन एग्जांपल, सो फर्स्ट स्टेज इज एनालिसिस. So suppose you have to design a program, you're planning to conduct a program. Let's say you're doing a program on stress management, for example, okay? And you are doing it for a healthcare organization. Now, what is the first step you'll do? What is the first thing you'll do? What will you analyze? Analyze क्या करोगे? कितने पेशेंट है और कितने को ये रिक्वायरमेंट है. पेशेंट नहीं, स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे. Training needs. What type of stress they are having? Okay. So the first thing probably, yes, before you come to that, probably you will find out जो level है audience का वो क्या है. Are they nurses or doctors or probably admin staff or probably the helping hands, क्या बोलते हैं उसको, जो वार्ड बॉयज होते हैं. तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि लेवल क्या है ऑडियंस का, बराबर है, या फिर वो सीनियर मैनेजर्स या मैनेजर्स हैं. सही बोल रहा हूं मैं? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस लेवल आपका जो प्रोग्राम है वो डिफर करेगा. प्रोबेबली आपके जो एग्जांपल्स यूज करेंगे आप, या कुछ भी वीडियोस या रोल प्लेस यूज करेंगे, वो डिफर करेगा इन डिफरेंट रोल्स. Am I making sense, Jigar? Nothing. Just talking to my dad. No, I'm asking, matlab, am I making sense? Yeah. Yes. Yeah. Okay. So first thing you'll analyze is who is your target audience, and depending on the target audience, probably you'll add relevant content to it. So if it's senior managers, I'll have probably more strategic examples and role plays. If it's say hospital staff, I'll probably add a lot of role plays related to daily, activities which they do. We'll also assess the existing resources. मेरे पास existing resources क्या है? क्या मेरे पास प्रोजेक्टर है या नहीं है? क्या मेरे पास फ्लिप चार्ट है, बोर्ड है, क्या है? मेरे पास रूम कितना बड़ा है? Depending on the number of audience, क्या रूम साइज प्रॉपर है या नहीं है? Prabjot, you have a point, please go ahead. Yeah, I want to ask, do we only analyze that what audience we are targeting, or there are many other elements and factors which we take into consideration? All the elements which you could think of. All the elements which you could think Anything of. which is related to like what kind of stress, why the situation is there, everything? Absolutely. Which will help you in designing the content.
Think about those factors. So what you mentioned is exactly okay. So first is analysis. Second is design. Now after you have analyzed मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मुझे कंटेंट क्या डालना है, क्या एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, मेरे क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. कॉन्स्ट्रेंट्स कुड बी, हो सकता है उनका टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, हॉस्पिटल स्टाफ का हो सकता है वो ज्यादा समय के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं हो. मैनेजमेंट बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को इनको आप जो भी आपको इनको ट्रेन करना है 1 घंटा आपके पास है, 1 घंटे में इसको ट्रेन करके दो मेरे को, मैं उनको पूरा दिन नहीं बिठा सकता. बराबर है ना? सो दीज आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स विच कुड कम फॉर एनालिसिस. तो 1 घंटे में आपको कैसे, कितना आप कंटेंट डालोगे जो 1 घंटे में कवर हो जाए और वो एक्सीड ना हो. बराबर है ना? सेकंड इज डिजाइन. नाउ इन द डिजाइन फेज it involves a lot of it involves creating a detailed plan for those for the course or program. You need to outline learning objective क्या होने चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी. क्या सिर्फ 1 घंटे में आप दो एक्टिविटीज डाल देता हूं, रोल प्ले डाल देता हूं और रोल प्ले से ही सारा डिराइव कर लूंगा, ये करना है? या उनको कोई वीडियो दिखा देना है, इसके अंदर 2 वीडियो डाल देता हूं और 2 एक्टिविटी डाल देता हूं, 15-15 मिनट की 2 एक्टिविटी हो जाएंगे और 5-5 मिनट का 2 वीडियो, उसको डिब्रीफ करूंगा, 1 घंटा हो गया, खत्म. क्या करना है? तो ये डिजाइन का पार्ट आएगा. ठीक है. थर्ड इज डेवलपमेंट. सो थर्ड स्टेज इज डेवलपमेंट. ड्यूरिंग दिस स्टेज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड कंटेंट आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द डिजाइन प्लान. मतलब आपने क्या डिजाइन किया, या वीडियो है, एक्टिविटी है, उसके हिसाब से आप डेवलप करोगे कंटेंट के अंदर मटेरियल क्या होगा, या आप क्या क्या बोलते हैं वर्बैटिम, आपका क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट क्या होगी इसकी, है ना? तो ये चीजें आपके डेवलपमेंट फेज में आएगी. दिस इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ कोर्स मटेरियल आल्सो. इसमें आप क्या उनको हैंड आउट दोगे कि नहीं दोगे, या उनके लिए कोई सेल्फ असेसमेंट शीट डिजाइन करोगे. तो ये सारी चीजें आपका डेवलपमेंट फेज में था. आप लिटरली बैठ के डेवलप करोगे स्क्रिप्ट को, कोर्स मटेरियल को एंड सारी चीजों को, पीपीटी को एंड ऑल दैट स्टफ्स. ठीक है. एंड फोर्थ इज इंप्लीमेंटेशन. सो इन द implementation phase where the actual training or educational program is delivered to the learners, it includes deployment of resources. जो भी आपने resources, पीपीटी, फ्लिप चार्ट, ये वो है ना, चेयर टेबल, जो रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, स्केड्यूल करना ट्रेनिंग स्टेशन, उनको आप कम्युनिकेशन भेजोगे, मेल करोगे, या प्रोबेबली नोटिस बोर्ड में लगाओगे. सारे लीडर्स, सारे उनके मैनेजर्स को आप लूप में डालोगे कि सो वेयर वर वी, हम कहां थे? वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स क्या होंगे, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स एंड ऑल. डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे? फर्स्ट यू विल डू अ सर्वे, डिस्ट्रीब्यूट सर्वेस टू सेल टीम मेंबर्स टू असेस कि उनका खुद का स्किल लेवल क्या है, कौन से एरियाज में उनको कॉन्फिडेंस है. जैसे कि पिच करने में कॉन्फिडेंट है लेकिन क्लोजिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई रैपो बिल्डिंग में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसको आप सर्वे फॉर्म देके आप उसको बोलोगे यार अपना जो है ना ये सेल्स प्रोसेस है, ग्रीटिंग, नीड असेसमेंट, रैपो बिल्डिंग, पिचिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, ये पैरामीटर्स है, बताओ उसमें आपको कहाँ लगता है कि आपको जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो ही विल डू दैट. इंटरव्यू, conduct interviews with sales managers to get the insights into the team strength and weakness. कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उसको क्या लगता है. तो हो सकता है लोगों के अपने बारे में कुछ और राय हो, मैनेजर की कुछ और राय हो, तो दोनों को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा. बराबर है ना? थर्ड इज ऑब्जर्वेशन. अब इन दोनों के कहे पे मत जाओ, खुद भी ऑब्जर्व कर लो. एक बार चले जाओ एक दिन फील्ड पे और साथ में उनको क्या बोलते हैं, उसको शैडो करना शुरू कर दो. 1-2 दिन 2-4 लोगों को थोड़ा सा शैडो किया, आपने ये देखा फील्ड पे किस तरह से कस्टमर पे बात, फील्ड पे किस तरह से कस्टमर पे से बात करते हैं. यू कैन ऑब्जर्व, देन यू कैन टेक कस्टमर फीडबैक. हो सकता है फीडबैक फॉर्म हो कहीं पे उससे रिलेटेड, तो कस्टमर से फीडबैक ले लिया. सो इस तरह से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के देन यू प्रायोरिटाइज द नीड्स बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा. तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे लैकिंग है, प्रोडक्ट नॉलेज पे है या प्रोसेस पे है या सॉफ्ट स्किल्स पे है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है ज्यादा, है ना? तो उस हिसाब से फिर आप अपना ट्रेनिंग कर लोगे. इस तरह से आपका टीएनए. सो इन दिस एग्जांपल टीएनए प्रोसेस
helps to the organization to identify a specific area where training and development program should be focused on. And as a result, the company can design training courses and resources that target to these specific needs, ultimately leading to a improvement in the sales and customer service skills. And that should align with your organization. ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. ठीक है जी. Any points, any inputs, any doubts, queries? Sorry. Sir, can I add one scenario here? Himanshu. Yes, please. Yes, please. Yes, Himanshu. For example, like we talked on need analysis. So on the same scenario, on the same need analysis, it is open for everybody. Yeah. For example, tomorrow or a day after tomorrow, your friend said, Kaushal sir, you have to take training in my, we have some family function in our home, and I want you give some memory training, motivational training, or 45 minutes some stress releasing or some engaging game like that for their purpose. So you can choose a topic like stress management or relationship building or motivational for 45 minutes like that. Now in family function there are all type of people coming. Maybe वहाँ बच्चे भी होंगे जो 5 से 6 साल के होंगे, 16 से 20 साल के भी बच्चे होंगे, पेरेंट्स होंगे जिनकी एज 30 से लेके 40 तक होंगी, वहाँ ओल्ड लोग भी होंगे जो 60 साल के भी होंगे, 50 से 60. बराबर. Now you have to create training 45 minutes. Now you have to create a need assessment here in this scenario. Now ठीक है. here is a different age background, different need, different everything. You have 45 minutes and we have to create training. Okay. Now हमारी जो theory है ना, यहाँ पे बहुत सारे question ये कर लेंगे. ठीक है, गुड. सो हिमांशु, आई एम श्योर आप ये जो एग्जांपल, ये जो केस स्टडी आप दे रहे हो, यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस सिचुएशन, राइट? Not yet, but in one of the training, one trainer asked me, so I just, मुझे याद आ गया, so मैं बोला चलो सबके लिए ओपन कर दो ताकि they will get okay like this. बहुत बढ़िया. तो जिस तरह से हर ट्रेनर करता है, अब मैं थोड़ा सा कूल और स्मार्ट बनूंगा और आपसे पूछूंगा आपने क्या किया, आप बताइए. He has not undergone this. Kaushal, I बोल रहा है said, कि he has not undergone this situation. नहीं. अच्छा, He is not in undergone नहीं भी this किया होगा. situation. अच्छा, नहीं भी किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैं हिमांशु अगर पूछ रहा हूं, आपके साथ आपने ऐसा क्या होगा तो जवाब आप दिया? क्या करोगे? क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? Here actually so many people give the different answer, but here my answer was क्योंकि कोई भी अगर आप need analysis करते हो तो next day it will be fail because everybody have different. अगर आप old people के example देते हो तो बच्चे relate नहीं करेंगे, बच्चों के example दोगे तो middle age लोग relate नहीं करेंगे, so there will be some people who feel bored. Now you have to make scenario where सब लोग relate करें. So here what I can do, though all my need analysis failed, so I will go 30 minutes before and I will go 1-to-1 and I will take a survey. 1-to-1 में पूछूंगा बच्चों चलो बताओ रिलेशन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, राइट, पेरेंट के साथ. Then मैं I'm gonna stop here. I'm gonna stop here. आपने बोला all training need analysis is failed. अभी आप कर क्या रहे हो? आप TNA ही तो कर रहे हो. Fail नहीं है. No, I said one day before whatever I did that is failed. Now I go on the stage 15 minutes before or 30 minutes before when people gather all there. और अब मैं अपना काम कर रहा हूँ on the stage. ठीक है. Because I don't know ना कि कौन family में कौन लोग आ रहे. Even my client is or a person who invited me, उसको भी नहीं पता कि कौन आने वाला कौन नहीं आने वाला. He just invited. तो यहाँ पे तो TNA जैसा होता ही नहीं है ना. It's only a engagement part. जैसे पार्टी है तो आप सबको अगर खिलाना है तो आप हाउसी खिला सकते हो, ठीक है. आप क्या बोलते हो, गाना गाने का गेम आता है अंताक्षरी, वैसे खिला सकते हो. It's just a engagement activity. Your friend TNA or TNA. So you are your friend is want you are a trainer. He know you are a very great trainer. He want कि आपसे लोग सुने बस, होता है ना Yes, अंदर में. absolutely right. Yeah, Okay, like that. okay.
Okay, Sir. can I answer? So good Yes, sir. caselet you've given, Himanshu. So as a trainer, it's your skill to identify the exact need in this situation. Here, the need is not learning. ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग नहीं है. यहाँ पे Absolutely क्लियर right. ऑब्जेक्टिव, Absolutely right. क्लियर जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसकी नीड क्या है? उसकी नीड है एंगेजमेंट, कि आप मेरे ऑडियंस को एंगेज करो. मेरे को नहीं मालूम इसमें बड़ा आएगा, बच्चा आएगा, बूढ़ा आएगा, कौन आएगा, आपको एंगेज करना है और एंटरटेनिंग बनाना है. और इस एंटरटेनिंग के दौरान अगर आप कोई लर्निंग निकाल सको तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रेनर हो, आप तो भगवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो चलो निकालो. That's exactly, that's his need, that's his रियल लाइफ expectation from you. सिचुएशन बताऊं क्या कौशल? इसको इसको हम रियल लाइफ डिस्कस कर लेते हैं, फिर सिचुएशन हम बताऊं? इसको हम डिस्कस हाँ, कर या लेते हैं, श्योर. फिर उस पे भी आएंगे. So in this situation, Himanshu, what you could do is you can choose from your pitara of activities. You can choose couple of activities which could appeal for both young ones and the old ones. There will be definitely some activity. Yeah. ठीक है. Memory game could be played with any age group. You can do that, and I'm sure you'll have a lot of other activities. Engagement, na? Right. Kaushal? Hmm. Kaushal, during the process of engagement of this group, they would be presenting their own, requirements. So है ना? sometimes, If you're, absolutely Azim, and sometimes जरूरी नहीं कि आप टीएनए एक दिन पहले या 2 घंटा पहले करें. हो सकता है कई बार आपको टीएनए राइट एट दैट मोमेंट भी करना पड़े. आप करते हो, सबकॉन्शियसली आप करते हो. उस टाइम आप ऑडियंस को पढ़ते हुए टीएनए कर, उनके माइंड को पढ़ते हुए आप टीएनए कर रहे हो, और अकॉर्डिंगली अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करते हो. You're thinking on your feet by looking at the feet, the reaction. This is also a TNA, Baba. है ना? तो ये है. जिगर जी. Just yes, sir. Before Jigar, sir, I want to say only that thing. Sometimes we do all the analysis, all the need, but when you go on the stage, there will be a different scenario. So, अगर हम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जल्दी जाते हैं, so we can identify on the spot, what your manager said, that is a different, and what is on the ground, the people want, that will be a complete different. So yeah, we can identify like that, and we can give our best. Yeah, Jigar ji. Absolutely. Yeah, Jigar, do you have any other point, scenario, real life situation? आप कुछ बता रहे थे, कुछ हो रहा है क्या? So we are through discussing the assignment questions. Here we are just discussing live case scenarios. Okay, I think that's about it. So can I just pause the recording here?